Om Agyantimirandasya Gyanangada Shilakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Slapitam Jena Bhutale Shvayamrupa Kadamaya Vedanti Svapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Bhom Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Dear Prabhus, I'd like to say that I'm simply overwhelmed by this most magnificent project that you have here in the outskirts of Mumbai. हरे कृष्ण भक्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुंबई के पहाड़ी नगरी में देख करके बहुत ही भाव विभोर हो गया हूँ। Under the direction of your Surdas, you're the best of the best. इसलिए सूरदास प्रभु के नेतृत्व में जो सभी उत्तमों में उत्तम भक्त हैं। For the last 53 years, I've traveled the world far and wide. पिछले 53 सालों में मैंने पूरे दुनिया का एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण किया है। I've been here, there, and everywhere. मैं यहाँ वहाँ हर जगह तक पर रहा हूँ। I've seen most of ISKCON's glorious projects. मैंने ISKCON के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखा है। But I've never seen anything like this project. पर ऐसा मैंने कहीं पर नहीं देखा। It's kind of like ISKCON in Svargaloka. ये जो है धरती पर स्वर्ग लोक के समान है। Everything's just first class. हर कुछ फर्स्ट क्लास है। Yeah. So I thank Surdas and the other visionaries and managers of this project, and I hope that I can come back, in a few months or next year when it's complete, and spend some time here with all of you. तो मैं सूरदास प्रभु और सभी जो यहाँ के व्यवस्थाकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जब ये पूरा हो जाएगा मैं दोबारा इस मंदिर में आऊँ। And when I come back, we'll have kirtan like that every night. और जब मैं आऊँ तो ऐसा कीर्तन हर रात को हम करेंगे। Because this is Lord Chaitanya's Sankirtan movement. ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है। And it means chanting, dancing, some Hare Katha, and feasting, all of which you're very expert at here. और ये जो केवल चैंटिंग, डांसिंग और उसके बाद में भगवत प्रसाद, यही चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। Actually, I feel very privileged to be here. तो ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है मैं यहाँ पर आया हूँ। So, dear devotees, today, throughout this great country of India, Bharat, devotees of the Supreme Lord are celebrating the opening of a beautiful temple in Ayodhya Dham, on the very ground where Sri Ramachandra walked as a boy. तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे भारतवर्ष में सभी भक्त मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या धाम में जहाँ वो खुद चले हैं उस भव्य मंदिर का उद्घाटन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। That was back in Treta Yuga, many millions and millions of years ago. तो ये त्रेता युग की बात है, बहुत कई लाख साल पूर्व। Now it should be noted that generally after even a famous person departs this world, his fame and name fade away in time. तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया से चला जाता है तो समय के साथ उसकी कीर्ति, उसका यश खत्म हो जाता है। He's forgotten for the most part. और वो भूला जाता है, सब भूल जाते हैं उसको। But not so for the Lord and His
pure devotees. लेकिन ये भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए लागू नहीं होता। For their glorious deeds continue to inspire us even down to the present day. और उनके जो कर्म हैं वो उनके जाने के बाद भी कई लोगों को जो है उत्साह देते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। That's enshrined in one particular verse of Bhagavad Gita. और ये भगवद गीता के एक श्लोक में बताया गया है। Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps. तो जो भी एक महान व्यक्ति करता है, आम साधारण जनता उसको फॉलो करती है। And whatever standards he sets by exemplary acts, the whole world pursues. और जो भी आचरण वो अपने उदाहरण से प्रस्तुत करता है, पूरी दुनिया उसका पालन करती है। So the glorious deeds of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, are enshrined in the epic Ramayana, which is as popular today as it was millions of years ago. Jai Shri Ram! भगवान रामचंद्र के जो महान कार्य हैं, वो एक महान ग्रंथ रामायण में उद्घोषित है और वो आज भी उतना ही पॉपुलर है या उतना ही जो है प्रख्यात है जो कई वर्ष पूर्व था। Lord Ramachandra is as popular today as he was in Treta Yuga. He's a very special personality. He's the Supreme Personality of Godhead. तो भगवान रामचंद्र आज भी उतने ही प्रख्यात है जितना त्रेता युग में थे, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम भगवान है। So this is a very historic day that we're all acknowledging that his place of birth and his pastimes of youth, Yojadam, they built a wonderful temple to mark that historic occasion. Beautiful temple. I watched the inauguration on TV today. तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भगवान के जन्म स्थान, उनके कर्म भूमि को आज एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर का रूपांतरण दे दिया गया है। और महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने आज टीवी में देखा कितना सुंदर मंदिर बनाया गया उनके लिए। Jai Shri Ram! Of course, all of Shri Ram's heroic deeds are again enshrined in the Ramayana by Valmiki. और वाल्मीकि मुनि द्वारा कृत रामायण में उनके सभी जो महान कार्य उसको उद्घोषित किया गया है। The Ramayana consists of 24,000 verses. रामायण में 24,000 श्लोक हैं। It's 6 cantos. 6 कैंटों में बांटा गया उसको। And it comprises 500 chapters. और 500 चैप्टर में उसको बांटा गया है। So I thought to speak on Ramayana today, but where do I start? It's just this vast ocean of nectar. Where do I start speaking about Ramayana? तो महाराज कह रहे हैं कि मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ? रामायण इतना भव्य, इतना दिव्य है कि कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। So I opened up the Ramayana. My eyes were closed. I had a big Ramayana. I opened it up like this, and I put my finger down, and I looked. I said, okay, that's what I'll speak about today. तो मैंने आज रामायण किताब को खोला और आँख बंद करके उस पर उंगली रखा, जो पेज खुला मैं उसका आज वही बोलूँगा आपके लिए। It's said that by tasting one drop of the ocean, one can understand what the whole ocean is like. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप समुद्र के एक बूंद का स्वाद चख लो, तो पूरे समुद्र का स्वाद आपको समझ में आ जाता है। So when I put my finger down, I was like maybe 50% through the Ramayana there. तो जब मैंने अपना उंगली रखा रामायण पे, तो लगभग 50% कंप्लीट हो चुका था। And the setting of where I was Rameshwaram or Setabandhu. It's the most famous place where Lord Ram crossed from Bharat to Sri Lanka over a bridge. मैं जिस कथा पे पहुंचा वो रामेश्वरम की कथा है, जब भगवान रामचंद्र भारत को क्रॉस करके श्रीलंका पहुंच रहे थे राम सेतु के द्वारा। राम सेतु का निर्माण हो रहा था, वो उपाख्यान में मैं मेरी उंगली रखाई। That was assembled by Hanumanji. Jai Hanumanji! And the other monkeys and bears, so that Ram could cross over the ocean and rescue Sita Devi. Sita Devi ki! तो ये सेतु को बनाने में हनुमान जी और अन्य सभी जो बंदर वानर और
भालू लोग ने हेल्प किया था भगवान राम को, ताकि वो जा करके सीता मैया को वापस ला सके। It's actually one of the most exciting parts of the Ramayana, where Sita is finally rescued. तो ये बहुत ही उत्साहजनक उपाख्यान है जहाँ पर फाइनली सीता मैया को राम जी वापस बचा के ले आते हैं। Rescued from who? किससे बचाया? No, I don't want to hear his name. महाराज कह रहे मुझे इसका नाम नहीं सुनना है। Ravana means, in Sanskrit, he who makes the universe scream. तो रावण का अर्थ है वो जो पूरे दुनिया को रुलाता है। He captured Sita Devi. और उसने सीता मैया को जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। He thought by going all the way to Sri Lanka and hiding her in the Ashok garden, no one would find her and he could enjoy her. तो उसने सीता मैया को जो है किडनैप करके जो है अशोक का वाटिका में जाकर के कैप्चर कर लिया था, ताकि कोई उनको पकड़ न पाए और वो खुद उनका भोग कर सके। But fortunately, Hanuman, who has so much shraddha, so much faith in Ram, he leaped. He's a monkey. He leaped all over the ocean to Sri Lanka, and he found her in the Ashok garden. भाग्य से हनुमान जो है वो एक ही जंप में जा करके लंका में जा करके अशोक वाटिका में सीता मैया की खोज कर लेते हैं। And he told her, Sita, Ram is coming. और उसने कहा सीता मैया राम आ रहे हैं। So he flew all the way back to the tip of India and he told Ram, I know where Sita is, she's in Sri Lanka, let's go and get her. और फिर वापस वो उड़ के आते हैं और राम जी कहते हैं कि मैंने सीता मैया खोज कर ली है और तुरंत चलो उनको हम वापस लेके आते हैं। So Lord Ram and his army of monkeys and bears, they marched to the very tip of India and came to the ocean. और जो राम जी और सभी वानर सेना के साथ जो है एकदम भारत के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके थे। Now Ramayana describes that when Lord Ram arrived on the shores of the ocean, the pastime is, he thought, how are we all going to cross this vast ocean? तो जब राम जी अपने वानर के साथ पहुंचे तो देखा इतना भव्य समुद्र जो सामने है उसको कैसे पार करेंगे? Of course, he's a Vignaswarat. God is all-knowing because he's present everywhere. So he could easily make the arrangement to cross over the ocean. No problem. लेकिन भगवान के लिए वो ये बड़ा कार्य नहीं था क्योंकि वो स्वराज है, वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। But because his devotees are always begging him for service, we're always begging God for service, he gave the service to the monkeys and bears. लेकिन क्योंकि उनके भक्त हमेशा उनकी सेवा चाहते हैं, तो इन वानरों को सेवा में लगाने के लिए उन्होंने ये राम सेतु का निर्माण शुरू किया। God is very great and we're very small. भगवान महान है और हम जो न्यूनतम हैं। He's the master and we're the servant. वो जो है वो मास्टर है, हम सर्वेंट हैं। It's very nice to be the servant of a glorious master. और एक बड़े ही महान मास्टर का दास बनना बहुत ही उच्च बात है। Who takes care of you. Who takes care of you in every way. और जो हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। We're always begging for service, aren't we, to Krishna? हम हमेशा भगवान से सेवा मांगते हैं। What does it mean, the Mahamantra? महामंत्र का मतलब क्या है? My dear Lord, my dear energy of the Lord, Shri Radhika, please give me service at your lotus feet. हे भगवान, हे राधा रानी, प्लीज हमें भगवान की सेवा में लगाइए। We don't chant mechanically, we chant with feeling. हम मैकेनिकली चैंट नहीं करते, हम भाव के साथ चैंट करते हैं, जप करते हैं। Oh my Lord, I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. हे भगवान, मैं इस गहरे समुद्र में भौतिक संसार में डूब रहा हूँ। Oh, you who give shelter to the shelterless. और आप जो है एक शेल्टरलेस व्यक्ति को आप जो है शेल्टर, आप आश्रय देते हैं। Please, dear Krishna, just this one time, extend your hand and save me. हे भगवान, एक बार अपने हाथ बढ़ाओ और मुझे बचा लो। That's how we chant with feeling. और इस भाव से हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram. One time a disciple, he asked Prabhupada that question that always comes up. Prabhupada, what does the Hare Krishna Mahamantra mean? एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब है?
So on that occasion, Prabhupada kind of paused. प्रभुपाद जी समय शांत हो गए, He closed his eyes अपनी आंखें बंद कर लिए and he thought for a moment. और कुछ क्षण के लिए सोचे, Then he opened his eyes. अपनी आंख खोले He looked at that disciple. और उस शिष्य की ओर देखा। He said, "My dear son, what does this mantra mean?" और उसने उसको कहा, मेरे प्रिय पुत्र, इस मंत्र का मतलब क्या है? It means, "My friend, my friend, my friend." इसका मतलब है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। So Prabhupada stated that, so when we chant, it's not mechanical. Hare Krishna, Krishna, Krishna. No. Chant some feeling that we're fallen and we need mercy. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें मैकेनिकली जप नहीं करना चाहिए, भाव के साथ चैंटिंग करना चाहिए। And mercy means service. और भगवान की कृपा मतलब है सेवा। Because by service, you're recognized by Krishna. सेवा से आप भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाओगे, उनके द्वारा जाने जाओगे। Just like if you have some children, they want to play all day. और लेकिन आपके पास बच्चे हैं और हमेशा खेलना चाहते हो। But you ask them to do some household chores. Help with the dishes, help clean the house, please. Help wash the clothes. तो लेकिन आप उसे चाहते हैं कि वो आपको कुछ घरेलू कामकाज में मदद करे। And if they do that service, you feel endeared to your children. Oh, you're a good boy, you're a good girl. Here's some ice cream. और अगर वो सेवा करना आपको मदद करते हैं तो आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो कि कितना अच्छा बच्चे हैं मेरे जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। It's a simple analogy, but actually that's bhakti. Krishna becomes endeared to those who serve him with love and devotion. ये बहुत ही साधारण उदाहरण है, लेकिन ये बहुत ही गहरा मतलब है कि कृष्ण जो है वो हमें रिकॉग्नाइज करता है, हमें प्रेम करता है, हम उनकी सेवा करते हैं तो। So Ram pretended, how are we going to cross over the ocean? तो हम जो है इस भवसागर कैसे पार कर सकेंगे? He knew one of his servants would take up the service. तो भगवान जानते थे कि उनके कोई एक दास जो है इस बड़े सेवा को ले लेंगे। So the first person to speak up was Vibhishana. He advised him, you should perform some tapasya, Ram, and ask the ocean to help. तो विभीषण ने भगवान राम को कहा कि आपको तपस्या करना चाहिए और समुद्र से पूछना चाहिए हम उसको कैसे लाएंगे। Who is this Vibhishana? कौन है ये विभीषण? Vibhishan was the younger brother of Ravana. विभीषण जो है रावण के छोटे भाई थे। He was a rakshasa. He was a demon like Ravana. वो एक राक्षस था रावण के समान। But Valmiki said he was of noble character. लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनका चरित्र बहुत ही गुणवान था। And when Ravana kidnapped Sita in the Dandakaranya forest, Vibhishan insisted to his brother, Ravana, you give that girl, you give that princess, you give that queen back to Ram. You nonsense. जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था दंडकारण्य वन में, तब विभीषण ने कहा था कि वापस कर दो इसको, तुम मूर्ख हो, वापस कर दो इसको। And when Ravana refused and was going to slap Vibhishan, he left and he went to join Sri Ramchandra. लेकिन जब रावण ने मना कर दिया, तो रावण विभीषण को मारने के दौड़ा और विभीषण ने उनका साथ छोड़ करके राम जी के शरण में आ गए। And when he showed up in the camp of Ramachandra, everybody went, whoa, that's the brother of Ravana, get him out of here. जब सबने देखा विभीषण को राम जी के कैंप में आते हुए तो कहा कि वो रावण का भाई है, उसको निकालो यहाँ से। You know the demons have their little horns, and these fiery eyes. He came, I want to be a Ram Bhakta. Yeah, right, you want to be a Ram Bhakta. Go back to Ravana. तो विभीषण जो थे वो राक्षस समान महाराज बता रहे एक्टिंग करके कैसा राक्षस का सिंह होता है और उसका चेहरा होता है। तो जब आके बोले कि मुझे राम भक्त बनना है, सब बोले अच्छा तुम्हें राम भक्त बनना है, निकल जाओ यहाँ से। No one trusted him. किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। However, Lord Ram is very compassionate, and after hearing different opinions, he gave his verdict, which gives hope to all aspiring devotees of the Lord who come from the kingdom of Maya to join ISKCON. तो भगवान राम बहुत ही दयालु हैं और जो भी भक्त उनके शरण में आते हैं वो उनको धैर्य देते हैं, उनको उत्साह देते हैं कि तुमको मैं माया से बचा लूंगा। ये भगवान का आश्वासन है। Ram could see the heart. Ram could see the heart of Vibhishan. He could see the heart, so he had a little bit of trust in him. भगवान राम ने विभीषण के हृदय में देखा और उन पर भरोसा किया।
he said something very famous, and it gives us so much hope. और उस समय उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो हम सब के लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण होप देता है. Listen to what Ram said to all the assembled monkeys and bears. और ये सब वानरों को भगवान राम ने उस समय कहा. He said, "It is my vow that if one only once seriously surrenders unto me, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे एक बार सीरियसली अगर वो मेरे आश्रम में आता है तो, saying, 'My dear Lord, from this day on, I'm yours,' मेरे प्रिय भगवान आज से मैं आपका हूँ, and prays to me for courage, और मुझसे जो है धैर्य के लिए जो मुझसे प्रार्थना करता है, I shall immediately award courage to that person. और उस समय मैं उसको एक जो है उपहार देता हूँ या बेनिफिट देता हूँ, And he will always remain safe from that time on." और उस समय से वो जो है निर्भय हो जाएगा आजीवन काल के लिए. ये मेरी प्रतिज्ञा है. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! So, like that Asura who had a change of heart, let's all take the same vow today. और जिस प्रकार वो विभीषण असुर का जो हृदय परिवर्तन हुआ, आज हम सबको प्रतिज्ञा करना चाहिए. Imagine you're before that beautiful deity of Ramachandra that's just been installed by your Prime Minister Modi in Ayodhya. You're sitting in front of that beautiful deity. आप एक समय कल्पना कीजिए कि आप आज जो विग्रह की स्थापना हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उस विग्रह के सामने आप बैठे हुए, ऐसा कल्पना कीजिए. Okay, just close your eyes and imagine you're in front of Ram. सब लोग आंख बंद कर लीजिए और उसको इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप उस विग्रह के सामने बैठे हुए हो. And you're speaking to him directly. और आप उस विग्रह से बात कर रहे हो. Repeat after me. मेरे पीछे दोहराइए. My dear Lord, from this day on, I am yours. Now in Hindi. मेरे प्रिय भगवान, आज से मैं आपका हूँ. According to Ram, now you're safe. From that time on, no more problems. Hariva! राम जी के कथन से आज से आप सब जो है पूर्णतः सुरक्षित हो चुके हैं और आपके जीवन में सारी समस्या खत्म हो चुकी है. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! So that Asura of sorts, he'd given advice. He said to Ram, "Do some tapasya and call upon the ocean to help you." तो विभीषण जो असुर थे उन्होंने कहा कि तपस्या करो और समुद्र देवता का आह्वान करो. So it's amazing. Ram followed Vibhishan's advice and he sat down for days fasting to get the blessings of the ocean. और राम जी ने विभीषण की बात को मानी और कई दिनों के उपवास में बैठ गए समुद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए. The Ramayana, Canto 6, Chapter 21, it's called Yuddha Kanda, describes the penance that Lord Ram did to get the mercy of the ocean to pass over. रामायण के छठे स्कंद में 21वें अध्याय में बताया गया कि क्या तपस्या राम जी ने किया समुद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए. Do you want to hear the penance that Lord Ram did? क्या आपको सुनना है क्या तपस्या उन्होंने किया? I'm quoting the scripture. मैं शास्त्र से बता रहा हूँ आपको. Thereafter Ram, the annihilator of enemies, उसके बाद राम जी जो सभी दुष्टों का संहार करता है, spreading sacred grass on the seashore, और एक सेक्रेट पवित्र घास पर बैठ गए समुद्र के तट पर, making a respectful salutation by joining his palms अपने हाथ जोड़ करके to the great ocean, समुद्र देवता की ओर देखते हुए, with his face turned eastward, और उनका जो मुख है वो पूर्व की दिशा में होते हुए, lie down in the sand with his arm, और रेती में अपने हाथ पैसे करके बैठ गए, resembling the body of a snake as his pillow. और एक सर्प का शरीर जैसा उसको अपना पिलो तकिया बना करके, Remaining there for 3 nights, और उस मुद्रा में वो 3 रात तक रहे. Ram, who is skilled in policy और राम जी जो सभी प्रकार के कलाओं में निपुण है and fond of piety, और जो है पुण्य कर्म के प्रवक्ता
waited upon the mercy of the ocean, the Lord of rivers. और जो है समुद्र देवता को भीख मांगने लगे कृपा के लिए, But nothing happened. पर कुछ नहीं हुआ. The ocean didn't reciprocate. जो समुद्र देवता थे उन्होंने कोई भी आदर नहीं किया. The ocean just said, no, not interested. समुद्र देवता जो है चुपचाप बैठे रहे, कुछ उनका प्रतिक्रिया नहीं हुआ. Varuna, you're the demigod of the ocean. The supreme Lord is calling upon you, and you're ignoring him. Watch out. और देवता लोग कहने लगे कि अरे वरुण देव, तुम देवता हो और भगवान तुमका आह्वान कर रहे हो और तुम उनको कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो. अब देखो क्या होता है. Sometimes the demigods get a little bit deviated. कभी-कभी देवता लोग जो है थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो जाते हैं. You know Indra, he became a little angry at Krishna and inundated Vrindavan with torrents of rain. आप जानते हो कैसे इंद्र ने जो है पूरे वृंदावन को डुबाने के लिए बहुत वर्षा की थी. So Ram, he got really frustrated with the ocean. He stood up, took one of his arrows, shot it into the ocean. भगवान राम को क्रोध आ गया और अपने जो तरकस में से एक बाण निकाला और महाराज ने व्यक्ति ने दिखाया, मैं नहीं कर सकता. समुद्र किया मारा. So the Ramayana, Valmiki puts it very poetically. तो रामायण को बहुत ही एक पद्य के रूप में लिखा है वाल्मीकि जी ने. Because poetry has a way of melting our hearts क्योंकि पद्य का जो है एक भाव होता है वो हमारे हृदय को पिघाल देता है. and awakening, devotional poetry awakens bhakti within our hearts. और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करता है. There's a saying, what is the use of a bowman's arrow unless it pierces his enemy's heart? In the same way, what is the use of devotional poetry unless it melts the hearts of the devotees? तो ऐसा कहा जाता है कि उस धनुष और बाण का क्या फायदा अगर वो किसी के हृदय को छीन न सके, उसी प्रकार उस पद्य का क्या फायदा जब किसी के भक्त के हृदय को पिघाल न सके. So, Jai Shri Ram! So therefore, Valmiki, he described this shooting the arrow into the ocean exquisitely beautifully. तो वाल्मीकि जी ने ये जो उपाख्यान है कैसे भगवान राम जो है तीर मार के समुद्र को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है. Swaying his terrific bow, swaying, मतलब हिला ऐसे हिला के अपने बो अपने धनुष को, and making the earth tremble by the violence of Ram's releasing his arrow. और जो है पूरे हृदय में कंपन मचने लगा जब राम जी अपने धनुष तीर को निकाले. He made a sound like the thunderbolt of Indra, kaboom, as the arrow entered into the ocean, like tsunami. जैसे सुनामी आता है वैसे और इंद्र का जो थंडरबोल्ट है उस समान उन्होंने तीर छोड़ा. And the ocean started boiling over. समुद्र जो है वो पूरा उबलने लगा. And when all the fish and all the aquatics started screaming, the ocean personified came out with folded palms and surrendered to Shri Ram. और जब सभी जो जलचर जो वहाँ के निवासी लोग थे वो सब कांपने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, तब समुद्र का बाहर निकल के आए और कांपते हुए हाथ जोड़ करके भगवान राम से प्रार्थना करते हैं. There's nothing better than seeing someone surrender to the Supreme Personality of Godhead. और कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को शरणागत होता है तो इसमें कोई बुरा नहीं है. Now the Skanda Purana describes the scene when Varuna Dev came and surrendered to Ram. It's so heart-touching. स्कंद पुराण में इसका वर्णन है किस प्रकार वरुण देव आकर के भगवान राम का शरणागत लेते हैं. ये बहुत ही हृदयस्पर्शी जो है व्याख्यान है. When I read the verse, my hair stood on end. जब मैं वो पढ़ता हूँ उस वाक्य को तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. महाराज कह रहे हैं. Would you like me to share with you that verse from Skanda Purana? आप चाहते हैं कि आपसे मैं वो Jai Shri Ram! Jai Hanuman! It's a little long, so sit up straight. थोड़ा सा बड़ा सब लोग सीधे बैठ जाइए. Take a deep breath. और एक गहरी सांस लीजिए. And fix your attention. और अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए. This is describing the ocean surrendering to Ram.
और ये बता रहे किस प्रकार समुद्र देवता ने भगवान राम को शरणागत हुए। The valiant ocean, the Lord of rivers, तो जो समुद्र है, जो सभी नदियों के स्वामी हैं, wearing a wreath of pearls, और जो है वो एक माला पहने हुए मोतियों की, his eyes resembling lotus leaves, उनके जो आँख हैं वो कमल पत्र के समान हैं, bearing a beautiful garland made of all kinds of flowers on his head, और अपने सिर पर भी जो है अलग अलग प्रकार के जो है मालाएं पहने हुए हैं, with ornaments of refined gold, और सभी सोने के आभूषण पहने हुए, adorned with excellent jewels made of pearls from his own domain. और अपने ही सतह से उठाए हुए जो मोतियों की माला और सारे ज्वेल्स पहने हुए, Decorated with different kinds of gems and metals, और कई प्रकार के दिव्य रत्नों से सुसज्जित, resembling Himavat mountain, और हिमवत पर्वत के समान दिखते हुए, wearing on his broad chest a locket made of white luster, और एक सफेद रंग का जो एक लॉकेट अपने हृदय अपने वक्षस्थल में पहने हुए, which resembled a kastuba gem, वो कस्तूरबा के समान दिखते हुए, with a multitude of waves whirling around him, और जो है समुद्र की लहरें जो है उसके आसपास बहते हुए, encircled by the clouds and the winds, और जो है सारे बादल उनको घेरे हुए, escorted by rivers, mainly the Ganga and Sindhu, और गंगा और सिंधु नदी के साथ, endowed with diverse forms resembling various deities, और कई प्रकार के विग्रहों का रूप धारण करते हुए, approached Ram with joined palms, और हाथ जोड़े हुए भगवान राम की ओर आगे बढ़ते हैं, who stood with arrows in hand, जो अपने हाथ में तीर लिए खड़े हैं, addressing him first as Lord Ram, और भगवान से कहते हैं हे प्रभु राम, spoke the following words. और ये जो आगे वाली श्लोक कहा, That's the introduction, ये इंट्रोडक्शन है खाली, describing how, Varuna, dressed beautifully, came before Lord Ram, and now he's going to speak some words to Ram. The Ramayana is so beautiful. और एक सुंदर श्लोक के द्वारा जो है वो प्रभु रामचंद्र को भी जो है संबोधन कर रहे हैं, So this is what Varuna said to Ram. और ये वरुण कहते हैं राम जी से, Oh, beloved Ram, हे मेरे प्रिय राम, earth, wind, water, and light remain fixed in their own nature. धरती, जल, आकाश, वायु अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, Therefore I am fathomless. और इसीलिए जो मैं हूँ, मेरी गहराई का कोई अंत नहीं है, fathomless. And my nature is that it is impossible to swim across my waters. और इसीलिए मेरे सतह से, मेरे ऊपर से जो है तैर के जाना संभव नहीं है. I am telling you now how to cross over me. और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझसे कैसे मुझे पार कर सकते हैं. Oh, excellent man, Ram, हे बहुत excellent व्यक्ति राम, you have one Varana monkey named Nala, the son of Vishwakarma. आपके जो मानव सेना में एक नर नाम का विश्वकर्मा का पुत्र है. Let this greatly energetic monkey build a bridge over me. और ये जो एक बहुत ही उत्साही वानर मेरे ऊपर एक पुल का निर्माण करे, सेतु का निर्माण करे. And over that bridge you can go and you can conquer Ravana and rescue Sita Devi. और आप उस सेतु के ऊपर जा करके रावण को मार करके सीता देवी को बचा सकते हैं. Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! Jai Sita Devi! Jai Hanumanji! Hare Krishna. It's getting late. Should I stop? No. You sure? Yes. You don't want to go home and go to sleep. So under this monkey Nala's guidance, the monkeys and bears in Ram's army began building a bridge तो to नल Lanka. के नेतृत्व में सारे मानव सेना और भालू सब जन मिल करके इस सेतु का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं. Over the Indian Ocean. और समुद्र इंडियन ओशन के ऊपर. And I read that the distance is about 800 kilometers. ये 800 किलोमीटर का लगभग लंबा पुल था.
So what they did is that they gathered trees and shrubs and rocks and boulders and began throwing them into the ocean to build a bridge. तो क्या करने लगे, सभी प्रकार के पेड़ और वनौषधि सबको उखाड़ करके पत्थर बड़े बड़े बोल्डर उठा के फेंक रहे थे समुद्र में. Now, the Skanda Purana स्कंद पुराण में gives a detailed report on how the construction took, how far they got every day. तो स्कंद पुराण में बताया गया कि हर दिन वो कितना दूर तक समुद्र में पुल बनाते चले गए. Skanda Purana ki. So I studied that and meticulously wrote down, because love is in the details, how far the bridge was built every day. तो महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने स्कंद पुराण में से उसको बहुत डिटेल को निकाला है ढूंढ करके, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है डिटेल, बारीकी से जाना, इसलिए उन्होंने उसको लिखा है हर दिन कितना कितना पुल बनाते गए. So on the first day they built the bridge 180 kilometers. पहला दिन 180 किलोमीटर का ब्रिज बनाया उन्होंने. On the second day they covered 256 kilometers. दूसरे दिन 256 किलोमीटर. On the third day they covered 270 kilometers. तीसरा दिन 270. And on the fourth day they covered 283 kilometers. चौथा दिन 283, 283. And the fifth day 294 kilometers of the bridge were constructed. पांचवा 294 किलोमीटर. So if you're into statistics, some people are, their business is statistics, just memorize that. That's all you need to know. तो अगर आप इसको बहुत गणना करोगे तो ये बहुत ही कुछ लोग करते हैं इसका, लेकिन बहुत डिटेल है, बहुत सूक्ष्म है. So during that marathon, a number of very significant things happened. तो उस जो मैराथन के समय बहुत सारे बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए. As the monkeys and bears, worked with all that material, it was sinking to the bottom of the ocean, especially the rocks and boulders. They just go down to the bottom of the ocean. It was a problem. तो एक समस्या आ गई कि जैसे वो पत्थर फेंक रहे थे वो तुरंत जाके डूब जाता था समुद्र में. So the monkeys, who had great faith in Ram, they came up with this idea. लेकिन मानवों को भगवान राम के बहुत विश्वास था, उन्होंने एक योजना निकाली. They took the bricks, the stones, and they wrote on the stones, Ram. तो उन्होंने एक-एक पत्थर को लिया और उसमें लिखा राम. And by writing Ram on the stones started floating. और राम लिखते जो है ये सारे पत्थर तैरने लगे. Jai Shri Ram! So in the Gita, Krishna says that he's the source of mystic powers. गीता भगवान कहते हैं कि वो योगेश्वर है, सभी योग शक्तियों के स्वामी हैं. He's the master of all mystics. और वो जो है सभी जो मिस्टिसिज्म के स्वामी हैं. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. He's present in the sound of his name, so therefore the stones, they mystically floated and didn't sink to the bottom. तो भगवान कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण. कृष्ण का नाम जो है वो बहुत ही मिस्टिकल है, इसलिए उनका नाम लिखते ही सब पत्थर तैरने लगे. One time I met a Ram Bhakta. एक बार एक व्यक्ति जो नाम भक्त था, He said, Maharaj, I'd like to tell you something, a shloka we have amongst Ram Bhaktas. तो राम भक्तों के बीच में एक श्लोक है और वो व्यक्ति महाराज से वो श्लोक कहने लगा. I said, yeah, what is it? महाराज ने कहा बताओ क्या है. He said, rocks with Ram's name will float, but a heart deprived of Ram's name will surely sink. तो बोले पत्थर तैर जाएंगे राम नाम से, लेकिन जो हृदय जिसमें राम नहीं है वो डूब जाएंगे. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Now, famously during the construction of the bridge, Hanuman, he learned a lesson of humility. तो ब्रिज बनाते वक्त हनुमान जी ने कई सारे लेसन सीखे. एक फेमस लेसन उनको सीखने को मिलता है. Of course, he didn't need to learn a lesson of humility. He's a pure devotee, but sometimes devotees, they put themselves in these situations to teach us. Of course, हनुमान जी परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको सीखने की दरकार नहीं, लेकिन हमारे को सिखाने के लिए ऐसा वो लीला करते हैं. So as Hanuman was taking these big boulders, writing Ram, तो हनुमान जी बड़े-बड़े बोल्डर उठा करके राम जी करके फेंक रहे थे समुद्र में.
there was a little squirrel, लेकिन एक गिलहरी थी छोटी सी, a little squirrel who was a great devotee of Ram. और एक गिलहरी जो भगवान राम के भक्त थी, And with her little paw, she was putting in little grains of sand और अपने into the ocean to help make the bridge. अपने छोटे छोटे पाँव से जो है वो थोड़े छोटे छोटे कंकड़ जो है फेंक रही थी समुद्र में। So the pastime is, Hanuman came and said, "You little squirrel, what are you doing? I'm throwing in big boulders. You're just putting in these little grains of sand. What difference does it make?" हनुमान जाके बोले, अरे गिलहरी, तेरे छोटे छोटे टुकड़े से क्या होगा? And Ram came along, he saw what was going on. He said, "Hanuman, that's not the proper way to think. She's doing as much devotional service as she can. I take her service as important as yours." और राम जी देखे, राम जी का हनुमान ऐसा मत सोचो, जो गिलहरी सेवा कर रही है उसकी सेवा मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारी है। It's not so much what service we do, big or small, but it's the consciousness in which we do it. तो हम कोई भी सेवा क्यों ना करें, हमारी चेतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। Krishna says in Gita, offer me with love a fruit, a flower, a leaf. They're very insignificant, but offer it with love, then I'll accept. तो कृष्णा कहते हैं पत्रम कुसुम फलम तोयम, कि तुम मुझे एक पत्ता दो, एक पानी दो, लेकिन प्रेम से दो तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। But best is to do big things for Krishna with devotion. That's the best. लेकिन जिसमें सबसे उत्तम है बड़े-बड़े कार्य करो, लेकिन भक्ति के साथ करो। Like one time Prabhupada in his humility said, my only fault was I always thought big for Krishna. तो प्रभा जी कह रहे हैं अपने विनम्रता के साथ कि मेरी एक ही कमजोरी है कि मैं हमेशा भगवान के संग बड़ा सोचता हूँ करने के लिए। Srila Prabhupada ki! Srila Prabhupada ki! Srila Prabhupada ki! So Ram appreciated that little squirrel. भगवान राम ने उस गिलहरी की सेवा को बहुत ही सराहा किया। So he petted the squirrel. और उन्होंने उस गिलहरी के उसके शरीर पर हाथ फिराया। It's okay, Lali, little squirrel. It's okay. I really appreciate your service. With 3 fingers, he did like that. 3 उंगली से उन्होंने उसके शरीर को सहलाया। And that's why, if you see the squirrels in India, little squirrels have 3 stripes down their back. और इसीलिए आप अगर भारत में किसी भी गिलहरी को देखोगे तो उसके शरीर पर 3 उंगली के निशान हैं। Because Ram appreciated the service of that squirrel with his lotus hand, he marked the squirrel's back with his fingers. क्योंकि भगवान राम ने 3 उंगली से उस गिलहरी की सेवा को सराहा था। So that Jai Sri Ram! Oh, glory to little squirrel! So the Skanda Purana describes what that bridge was like when it was finished. तो स्कंद पुराण में मेंशन बताया गया कि कैसा वो समुद्र का वो सेतु था। It says, this beautiful and lovely bridge, वो बता रहे हैं कि ये सुंदर जो सेतु है, constructed across the ocean, 2 समुद्र के बीच में बनाया हुआ, which was the abode of alligators. जो कि एक घड़ियाल का जो है घर था समुद्र। There were alligators in the ocean. वो उस समुद्र में बहुत सारे घड़ियाल थे, मगरमच्छ थे। This bridge shone brightly like the Milky Way of stars in the sky. तो ये जो समुद्र है वो उसी प्रकार चमक रहा है जिस प्रकार जो आकाश में वो तारामंडल चमकते हैं, उसी प्रकार। So finally the scene is set. Ram and the monkeys and bears are going to cross over the ocean. तो अभी जो है सीन सेट हो गया है और राम और उनकी मानव सेना जो है समुद्र पार करने के लिए तैयार है। And we know that they're going to be successful. और हमें पता है कि वो सफल होंगे। Prabhupada noted one time, he said, just as Lord Ram conquered Ravana in Lanka, so I am, with monkeys and bears, I'm conquering the world with my disciples. तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार राम ने भालू और वानरों की सहायता से पूरे लंका पर विजय प्राप्त की थी, मैं पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहा हूं अपने शिष्यों के साथ। We're like, monkeys and bears and little squirrels. हम सब जो है वानर, भालू और छोटे गिलहरी के समान हैं।
What is your name, Lali? आपका नाम It's a bit, I'm just going to call you Little Squirrel. Big round of applause for Little Squirrel. She's a little girl, but she's listening to the Ramayana so attentively. This is a good sign. So the monkeys, they were just, you know, monkeys scamper. All the monkeys, they've seen it in Vrindavan. The monkeys were so eager to serve Ram, they started scampering over the bridge. Before the bears are boom, 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 the bears. But the monkeys. So Skanda Purana, chapter 6, from verses, Canto 6, chapter 22, from verses 83 to 84, it discusses how the monkeys cross the bridge. It's so cute. तो स्कंद पुराण में स्कंद 6 अध्याय 22 श्लोक क्रमांक जो है 83-84 बताया गया है किस प्रकार जो ये बंदर है ये उस सेतु को पार किए और बहुत सुंदर बताया गया. Would you like to hear how the monkeys cross the bridge? Some monkeys went along the middle of the bridge. कुछ बंदर जो है वो ब्रिज के बीच से गए. Some others crossed along the sides. और कुछ लोग जो है उस ब्रिज के साइड से. Some other monkeys jumped into the water. और कुछ लोग तो समुद्र में कूद गए. Some of them marched forward like military on the path of the bridge. और कुछ लोग आर्मी के समान ठप 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 चलने लगे. Some monkeys flew in the sky. कुछ लोग उड़ के चले गए. Like Garuda the eagle. और गरुड़ के समान. And the highly terrific sound of the ocean, और जो समुद्र की जो ध्वनि थी, you know, was covered up by the great sounds of the terrific monkeys who were crossing over the sea. तो उनका जो ध्वनि था, उनका जो स्वर था, वो छुप गया इन बंदरों के कोलाहल से. Headed by Hanuman. हनुमान जी उनका नेतृत्व कर रहे थे, वो सबसे आगे. Jai Hanuman ji! Jai Shri Ram! Jai Sita Devi! Jai Lakshman! No cheers for Ravana. So because of these amazing, you know what happened. It's 9:30. You know how Ram went and fought, you know, and his final arrow into the heart of Ravana, and Ravana fell, and they got Sita and went back to Ayodhya. आप सबको कथा बताइए कैसे राम जी गए पार करके और एक तीर से जो है रावण को मारा और सीता देवी को लेकर वापस अयोध्या आ गए. But as a final note, the Skanda Purana glorifies this particular place where this pastime took place, where the bridge was constructed and the army crossed over. That place is considered very sacred, Rameshwaram. तो स्कंद पुराण में वो स्थान जहाँ भगवान ने सेतु बनाया और पार में सीता मैया को लाने के लिए गए, रामेश्वरम का बहुत गुणगान करता है स्कंद पुराण. Skanda Purana glorifies that sacred place. स्कंद पुराण उस स्थान की महिमा बताते हैं. It's also known as Setu, Setu Bandha, but Setu. और उस स्थान को सेतु बंध भी कहते हैं, सेतु. Skanda Purana chapter 1 verse 22. स्कंद पुराण में कैंटो 1 चैप्टर 22. The dust particles on the earth can be counted. The dust particles on the earth can be counted. सब धरती के सारे जो डस्ट पार्टिकल है उसको हम काउंट कर सकते हैं. The stars in the sky can be estimated. जो पूरे आकाश में जितने भी तारे हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं. But the merit resulting from a visit to Rameshwaram, to Setu, cannot be known even by Anantadev. लेकिन रामेश्वरम स्थान में जाने का जो महिमा है उसको अनंत देव भी काउंट नहीं कर सकते. इतना महत्वपूर्ण स्थान है.
If anyone tells someone else, go to Setu, he also attains the same benefit, O Brahmanas. This is certain. और संतों ने कहा कि अगर कोई कहता भी किसी को कि सेतु बन जाओ या रामेश्वरम जाओ, उसको भी उतना ही फल मिलता है. If a person lies on the sand of Setu and the particles of sand stick to his body, अगर एक व्यक्ति उस सेतु में जाके सो जाता है और वो जो बालू उसके शरीर में चिपक जाता है, as many sins of killing brahmanas as there are in sand particles on his body are destroyed. There's no doubt about it. जितने पार्टिकल सैंड के उसके शरीर में लगे हैं, उतने ब्राह्मणों को भी उसने हत्या किया है, तो तुरंत सब भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है. If a person thinks about someone who's taking a holy bath in Setu, the sin of associating with sinful people is dissolved from his heart. अगर वो व्यक्ति सोच भी लेता है उस व्यक्ति के बारे में जो सेतु में स्नान कर रहा है, तो उसको जो भी पाप चढ़ा है एक पापी व्यक्ति से जुड़ने के कारण वो सब धुल के राख हो जाएगा. So this is just a drop in the ocean of the pastimes of Lord Ramachandra. तो ये एक समुद्र में बिंदु के समान है भगवान के अनंत लीलाओं में से, रामचंद्र की लीलाओं से. People have been reciting this Ramayana for millions of years actually. लोग इस रामायण को कई लाख सालों से जो है इसका गुणगान कर रहे, गा रहे रामायण को. And each and every drop is relishable. और हर एक जो इसका बूंद है, बिंदु है, वो बहुत ही नेक्टेरियन है, रिलेशेबल है. And I could go on for many hours because there's many drops, but it's getting a little bit late. Let's just let these pastimes that we've shared this evening, capture them, keep them in your heart like you would put precious jewels in a treasure chest and lock it so they never go away. तो मैं कई घंटों से बोल सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा है. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन सब लीलाओं को अपने हृदय में एक दिव्य रत्न के समान बंद करके उसको ताला मार दीजिए, लॉक कर लीजिए. And I thank you for this privilege to speak some words from Ramayana. और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे रामायण से कुछ कहने के लिए प्रेरणा दिया और मौका दिया. It said both the speaker and the audience are purified by Krishna Katha, Ram Katha. तो ये कहा गया है कि जो स्पीकर है, वक्ता और श्रोता दोनों ही बहुत भाग्यशाली होते हैं, दोनों का ही लाभ होता है कृष्ण कथा, राम कथा करने से. It's almost like today's Ram Navami or something. I don't know. आज ऐसा लग रहा है राम नवमी है. But it's all glorious because finally a beautiful temple has been built at Yogapith where Lord Ram appeared. That beautiful temple there is actually for all of you to go and see this beautiful form of Ramachandra. तो ये सब हो रहा है क्योंकि आज बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है और आप सब जाकर के उस मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकते हैं, ऐसी महाराज कामना कर रहे हैं. So I just have one request. तो मेरी आप सबसे एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है. I'm a poor sannyasi. मैं एक भिक्षुक हूँ. And every day I have to do bhikshu. I have to go in and beg for my maintenance. तो मुझे हर दिन जाकर के भिक्षा मांगनी पड़ती है मेरे जीवोपार्जन के लिए. So I'm begging you मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ to please allow me to come back and be with all of you again. तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं दोबारा यहाँ पे आप सबके साथ फिर से मिलूं, जुड़ूं. Please give me the seva of sharing the nectarian pastimes of the Lord with you again, and please give me the nectarian privilege of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, with all of you. तो महाराज कह रहे हैं कि आप सब मुझे ये सेवा का अवसर दोबारा दें कि मैं आप सबके साथ आकर के हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार इसका जप करूं. No. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. And just one last thing before I go. तो मैं जाने से पहले एक आखिरी बात बोलना चाहता हूं. It's a little embarrassing for me. ये मेरे को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा है. Because typically sadhus, they shouldn't speak about themselves. साधु को अपने बारे में कभी नहीं कहना चाहिए. But I'd like to leave you with a sort of a gift.
Costs a little bit, but it's more of a gift than anything else. लेकिन मैं आप सबको जो एक तोहफा देना चाहता हूँ, थोड़ा आपको कॉस्ट चढ़ेगा, बट स्टिल मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ. This is a book which, one of my books which we recently produced. तो एक किताब जो है ये महाराज ने लिखा है. It's called The Sacred Forest of Vrindavan. इसका नाम है The Sacred Forest of Vrindavan. It's a Parikama guidebook. ये गाइड बुक के समान है. When I was locked down during the pandemic, I was locked down in Vrindavan. It wasn't easy because I've been a traveling sannyasi for 50 years, and traditionally sannyasis have to keep moving. They can't stay more than 3 days in one place. तो सन्यासी के लिए जो है पारंपरिक तरीके से हर तीसरे दिन उनको मूव करना पड़ता है या चलना पड़ता है, दूसरे स्थान में जाना पड़ता है. But here I am in my apartment in Vrindavan. I can't go outside because COVID. लेकिन मैं जो वृंदावन में कोविड के समय में कहीं बाहर नहीं जा पाया. So I looked at my library. और मैंने अपने लाइब्रेरी को देखा. My dear godbrother Banu Swami, he's translated 161 scriptures, our Gaudiya Vaishnava traditional scriptures. They're all in front of me. तो महाराज के जो गुरु भाई हैं भानु स्वामी महाराज ने 161 ग्रंथों का अनुवाद कर लिखा था. वो सारे किताब महाराज की लाइब्रेरी में उनके सामने रखे हुए थे. And many of them describe the glories of Sri Vrindavan Dham. और उसमें से बहुत सारी किताब श्री वृंदावन धाम का गुणगान कर रहे थे. And we all know that Sri Vrindavan Dham is our ultimate destination. और हम सबको पता है कि वृंदावन धाम जो हमारा परम लक्ष्य है. Am I correct? क्या मैं सही हूँ? We want to fall out of love with this material world and into love with the spiritual world, which is Goloka Vrindavan. तो हम सबको इस भौतिक जगत से आसक्ति को काट करके वृंदावन धाम से आसक्ति में जोड़ना है. But how can you love someone you don't even know? लेकिन आप किसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं इसके बारे में आप जानते नहीं हैं. So as a service to the Vaishnava community, I wrote this book, and there'll be 25 more in the series, just about Vrindavan. तो ये वैष्णव की सेवा के लिए मैंने वृंदावन के बारे में एक किताब लिखी है. The holy places of Vrindavan, जितने सारे दिव्य स्थान हैं वृंदावन में, the pastimes that take place in those holy dhams, उस धाम में जितने सारे लीलाएं भगवान ने की है, the personalities of Vrindavan, और जो सारे दिव्य पुरुष वहाँ पर हैं, the mood of Vrindavan. वहाँ का भाव वृंदावन का. As much of Vrindavan as I could grasp in 4 years is here in this book. तो जैसा वृंदावन ओरिजिनल रूप में है वो इस किताब में महाराज ने उद्घोषित किया है. So you can take it to Vrindavan. It's like a guidebook around Vrindavan. तो आप इस किताब को लेकर के गाइड बुक की तरह वृंदावन के गलियों में घूम सकते हैं, जा सकते हैं. And there's many beautiful photos as well to help you understand इसमें Vrindavan. बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं आपको वृंदावन को समझने के लिए. So you can take it with you and Prikamamar, you go around. रात में परिक्रमा का वृंदावन की इस किताब को ले जा सकते हैं अपने साथ. And if you can't go to Vrindavan, you can fall in love with Vrindavan in your own apartment just by reading the book. और अगर आप वृंदावन नहीं जा पाए तो अपने घर में बैठ के इस किताब को पढ़ के आप वृंदावन से प्रेम में डूब सकते हैं. So enough said, we're selling the book. महाराज को एड्रेस भी है कि वे किताब बेच रहे हैं. It's a little expensive because it's a very high class book. Like you do everything high class here. Surdas, his love for Prabhupada has manifested in a very high class way with this beautiful project. He knows how to do things first class. तो जैसे आपका मंदिर इतना हाई क्लास है और महाराज सुदास जी का गुणगान कर रहे हैं कि वो हर कुछ हाई क्लास करते हैं, तो इसलिए हमने भी इस किताब को हाई क्लास बनाया. इसमें थोड़ा कॉस्टली है. Surdas Prabhu ki! Surdas Prabhu ki! Surdas Prabhu ki! All his helpers ki! All of you ki! Jai Shri Ram!